Good morning, dear students. You may have heard plants are Good also morning, living sir. organisms. Good morning, sir. Plants are also living organisms. They also require energy to survive their life. Good ମାନେ morning, living sir. organism ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ। Good morning, sir. ଏନର୍ଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? Yes, ସେମାନଙ୍କୁ sir. ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଆମେ ମାନେ ଏନର୍ଜି ପାଉଛୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଭେଜିଟେରିଆନ କିମ୍ବା ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ଆମେ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें प्लांट पाउछु ओके नै तो प्लांट एनर्जी केमति पांती तांको फूड एनर्जी केमति प्रिपेयर करंती नेचर से प्रोसेस टा कोन फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस रे से माने प्रोड्यूस करंती नै न तमे सुनथिबो आलोक संश्लेषण हां तो ताको हम कहूछु फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस by which plants produce food energy for themselves so today's topic is photosynthesis. It's a joined word, joined words, photosynthesis. So photosynthesis is derived from two words. Photosynthesis is a process. So it's a term is derived from two words. Photosynthesis dita word ru aschi photo mane light, photo mane light, synthesis means preparation, synthesis means preparation, photo means light, synthesis means preparation. So what is photosynthesis? Photosynthesis is the preparation of food in presence of light. Synthesis in presence of photon. Synthesis in presence of photon. So preparation of food in presence of sunlight is called as photosynthesis. Okay. So what are the main points you may have heard? तमे सुनिथिबो गोटे इक्वेशन photosynthesis रो गोटे इक्वेशन अछि. photosynthesis पय कोन कोन दरकार? कार्बन डाइऑक्साइड दरकार. कोन दरकार? कार्बन डाइऑक्साइड. आ कोन दरकार? हाइड्रोजन दरकार. जे हाइड्रोजन हम से कोठ पाइबो? हाइड्रोजन गैस डायरेक्ट नहीं परिबनी से तो हाइड्रोजन टा से कोठ पाइबो? H2O. वेरी गुड. तो CO2 plus H2O. तो फोटोसिंथेसिस करिया पय प्लांट पाखर गोटे कणिका थाय बोली हम जानि छु. प्लांट कंसिस्ट ऑफ सम पिगमेंट्स दैट आर कॉल्ड photosynthetic pigment. कोन को हमें photosynthetic pigment. So से photosynthetic pigment से कोन करिवो? तार मुख्य काम से सनलाइट को ट्रैप करिवो. कोन करिवो? सनलाइट को ट्रैप करिवो. तो सनलाइट को हमें एंटी सिंबल दे दो. तो सनलाइट थोड़े sunlights are trapped by chlorophyll CO2 H2O in presence of sunlight chlorophyll molecule traps sunlight produces कौन प्रोड्यूस हुए हम जानि छु श्वेत सार तैयारी हुए ना कि श्वेत सार माने ग्लूकोज तो ग्लूकोज ता सह आमे प्लांट रो गोटे गैस पाऊ फोटोसिंथेसिस रो गोटे बाय प्रोडक्ट कोन सेटा ऑक्सीजन कोन ऑक्सीजन O2 the reaction is visible मैडम कैमरा रोचंदी तो किसी रिप्लाई दोनन ओके the reaction is visible okay so what happens in photosynthesis the light energy converted to food energy or chemical energy light energy converted to chemical energy. One point, this entire reaction was given by a scientist called as Stephen Hales. Stephen Hales have given this broad outline about the equation of the photosynthesis. So he is regarded as father of plant physiology. Clear? So what happens? The light energy converts to food energy. One.
हियर कार्बन डाइऑक्साइड केतरा कार्बन अछि गोटे ना अधिक अछि CO2 एडी कार्बन ऑक्सीजन अलगा तो कार्बन एडी केतरा अछि गोटे अछि एडी ग्लूकोज तार फार्मूला होछि C6H12O6 वेरी गुड तो एडी कार्बन गोटे एडी कार्बन केतरा 6टा तो एडी कार्बन जते बेले आ गोटे कार्बन ऐड हुए ता माने से इलेक्ट्रॉन गेन करे कोन करे इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इलेक्ट्रॉन जदि गेन करे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन करे एडी सिंगल कार्बन रो कार्बन 6 हला कार्बन 1 रो कार्बन 6 हला तो ताको हम कहबा रिड्यूस हला कोन कहबा रिड्यूस हला बा रिडक्शन हला तो इन फोटोसिंथेसिस CO2 is reduced to glucose CO2 is reduced to glucose clear next the in photosynthesis water molecule required for this process and along with glucose some water molecule also produce so that H2O is 12H2O kade 12H2O so here 6H2O are produced 6H2O are produced along with 6 molecule of O2 6 molecule of O2 so carbon reduced to carbon dioxide reduced to glucose carbon dioxide reduced to glucose and the light energy converts to food energy or chemical energy and that light is trapped by chlorophyll pigment or photosynthetic pigment and the last is some molecule of oxygen are produced some molecule of oxygen are produced clear so this is about a simple introduction to photosynthesis clear now site of photosynthesis कोठी हुए एडी आउट के बैलेंस हबो कार्बन डाइऑक्साइड केतरा दरकार एडी कार्बन 6 टा थिला हेले एडी कार्बन गोटे अछि एडी केतरा कार्बन डाइऑक्साइड दरकार 6 टा 5 टा नहीं 6 टा 6 carbon gives rise to C6H12O6 clear now site of photosynthesis where photosynthesis takes place photosynthesis कोठी हुए ताको हम कहबा site of photosynthesis तो photosynthesis कोठी हुए गच्छर हुए गच्छर कोडे हुए कांडर हुए ना पत्र हुए ना फूल ना फल रे पत्र हुए पत्र रे कोन थिबा जगु एंती हुए क्लोरोफिल थिबा जगु से क्लोरोफिल टा सेल रे थाए ना सेल रो बाहर थाए सेल रे थाए सेल रो को पार्ट रे थाए सेल रो साइटोप्लाज्म रे थाए सेल रो सेल nucleus ro the outer part of nucleus and the inner part of cell wall cell membrane cell wall cell membrane then the entire ground matrix of the living part in the center there is a larger cell organelle that is nucleus and the portion below the nucleus and out inner to cell wall cell membrane se part ko hum kon kohche cytoplasm kon kohche cytoplasm that you will study in detail in cell biology padla bele star hum tome detail padibo to cytoplasm kon achi chloroplast kon achi chloroplast that chloroplast is the site of photosynthesis chloroplast is the site of photosynthesis so what is the structure of chloroplasts are generally their shape is spherical or globular or elliptical or many different kinds of shape of chloroplasts have been reported spirogyra re ribbon shape rehtibo spirogyra oda siuli setire ribbon shape ro chloroplast rehtibo gode algae sera hochi chlamydomonas setire cup shape ro chloroplast rehtibo so basically am koi pariba spherical globular or elliptical or etc different type of shapes of chloroplasts are there
क्लोरोप्लास्ट बहुत प्रकार शेप रो अछि. So let us go to the schematic diagram of a chloroplast. I'm going to spherical shape kariba chloroplast ro. So suppose a schematic diagram, we will take the chloroplast as a spherical or elliptical shape. Spherical माने तुम्हारा ball body, globular माने ball की टिके irregular होई पारे, elliptical माने टिके अंडाकृति भलिया रहइबो, elliptical. तो आमे shape भाबिया spherical. तो a chloroplast is surrounded by two layers. Surrounded by two layers. केतरा layer? दीटा layer. ताको आमे कहबा chloroplast envelope. Outer membrane, inner membrane. गोटे chloroplast रो दीटा covering अछि, गोटे होछि outer membrane आ गोटे inner membrane. So both are called as chloroplast envelope. So outer membrane followed by inner to outer membrane, there is inner membrane, outer membrane and inner membrane, and both are collectively called chloroplast envelope. Both are collectively called chloroplast envelope. Chloroplast envelope. So inner to this is the membrane part. What a chloroplast, the membrane it provides the shape to the chloroplast. Outer or inner membrane jogu ताको गोटे आकार मिले आ से कवर करे आ प्रोटेक्शन करे. तो inner to outer and inner membrane or inner to chloroplast envelope, there are two main parts of chloroplast. Chloroplast ro dita main part अछि. गोटे होछि ग्राना आ गोटे होछि स्ट्रोमा. Very good. गोटे होछि ग्राना आ गोटे होछि स्ट्रोमा. Stroma. So stroma is the ground matrix. Stroma is the ground matrix, or stroma is the ground living substance of the chloroplast. Chloroplast ro entire part re taro entire inner part re jaha achi taku ame कहबा stroma, and it is a liquid part. It is a liquid part. kon कहबा se ground living matrix and it is a liquid. It consists of etre kon thae stroma re गोटे single double stranded DNA थिबो. Single double stranded circular DNA थिबो. Single double stranded दीटा strand थाए DNA रो आउ circular single double stranded circular DNA गोटे DNA RNA proteins minerals enzymes protein mineral enzymes are present inside the stroma. So enzymes protein mineral etc. So stroma is the ground living matrix inside the chloroplast envelope and it is the living part. Then apart from stroma there is another main part that is called as grana. So grana is the membrane part. It is a membranous system.
The grana is a entire membranous system. गोटे लेयर जागर तयारी छि मेम्ब्रेन जागर तयारी छि ताको हम कहू छै grana. The entire part is called as grana. Plural name. So grana includes a singular granum. गोटे गोटे हम कोन कहबा granum. ए पूराटा होछि grana से गोटे गोटे होछि granum. Clear? So grana consists of number of granum. Number of granum. Each granum consists of thin coin-like membranes. Thin coin-like membranes. तमर coin भलिया अछि टंगाडा देटा किबा कैरम बोर्ड coin भलिया ओटे coin जाको थाए present one atop another. गोटे ऊपर आ गोटे थाए किबा गोटे तळे आ गोटे थाए ताको हम कहबा thylakoid. कोन कहबा thylakoid. So grana is the entire membranous system inside the chloroplast. Granum consists of several granum. Grana consists of several granum. Each granum consists of a number of thin coin-like membranes called as thylakoid. Clear? Thylakoid. So this stroma photosynthesis has two reactions. Photosynthesis has two reactions. One is light reaction and the other is opposite kona dark reaction. Light reaction and dark reaction. What is important here, this thylakoid and these are the connecting membrane are called as lamella. कौन कहबा lamella. या को thylakoid को हम साधारणतः कहि परिबा grana lamella. कौन कहि परिबा grana lamella. आ दिरा thylakoid जो join हेछि ताको हम कहि परिबा stroma lamella. कौन कहि परिबा stroma lamella. So there are two types of lamella. Thylakoid can also be said to be grana lamella and the lamella which joins two granum are called as stroma lamella. कौन कहबा stroma lamella. Stroma lamella. So what is important here, thylakoid and stroma lamella they consist of chlorophyll molecule. Thylakoid रे और stroma lamella रे कोन थाए chlorophyll molecules थाए. और से chlorophyll molecule कोन करिवे light reaction करिवे. बुझि परछो. तो thylakoid and stroma lamella consist of chlorophyll molecules. That chlorophyll molecules carry out the light reaction. So grana is the site of light reaction. Stroma, the entire liquid part of ground matrix, is the site of dark reaction. Clear? So the light reaction takes place inside the grana and dark reaction takes place inside the stroma. Clear? So this is the site of photosynthesis. So once again, a chloroplast is the site of entire process photosynthesis. So chloroplasts are usually spherical, globular, elliptical, or they may have some different type of shape. So chloroplast is covered by an outer membrane and inner membrane which are collectively called as chloroplast envelope. Chloroplast envelope. Inner to chloroplast envelope, the entire part is divided into two parts. One is stroma and the other part is grana. So stroma is the ground matrix. Stroma is the ground matrix. It is a living part consisting of single double-stranded circular DNA, RNA, enzymes, proteins, minerals and water. But the thylakoid, the grana, is the entire membranous part inside the chloroplast. That grana consists of several granum. Gote grana kete jako granum thae. And each granum consisting of a number of coin-like membranes present one atop another. गोटे ऊपर आ गोटे थाए किबा तळे थाए नै कि ताको हम कोन कहले thylakoid. The grana, thylakoid and stroma lamella which are the joining membranes between two granum. These are the site of light reaction. Stroma is the site of dark reaction. Clear? Now photosynthetic pigment. The introduction to photosynthesis and what is the site of photosynthesis. What is the process of photosynthesis and where it takes place. Now photosynthetic pigment. Photosynthetic
pigment. Pigments are molecules. Pigment माने molecule जाको which are the property to absorb light. So photosynthetic pigment. The pigment which are involved in photosynthesis process, particularly in photosynthesis process, these are called as photosynthetic pigment. There are some other pigments which may not involve in photosynthesis. So apart from that, those pigments they are helpful in absorbing the sunlight is called as photosynthetic pigment. So that photosynthetic pigment is mainly of three types. केते प्रकार तीन प्रकार तमे you may have seen different colors of leaf. केते प्रकार तमे कलर रो लीफ जाको देखिथिबो हो कि नै ग्रीन ब्लू ग्रीन ऑरेंज हां आ बेले बेले किछि येलो पैचेस थिबो हां तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स देखिछो बट frequently you may find blue green or green or dark green colored leaves. So photosynthetic pigments depending upon the color of the pigment they are mainly of three types. What are these? The main pigment is chlorophyll. पत्रर कलर को देखिले पिगमेंट रो कलर को देखिले से मान होचन तीन प्रकार गोटे होची क्लोरोफिल सेकंड कैरोटिनॉइड थर्ड होची फाइकोबिलिन क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड फाइकोबिलिन chlorophylls are generally green in color. Chlorophylls are generally green in color. Green means that may be blue green, black green or dark green or light green. Green. Carotenoids are usually orange or yellow in color. Orange or yellow in color. Orange color रो तमे कौन देखिछो लीफ छाडी की orange color रो कौन देखिछो तमे प्लांट पार्ट orange color रो को प्लांट पार्ट देखिछो देखिनो टिके इमेजिन करो orange color रो कौन देखिछो अरे orange color orange खाउछो हो कि नै orange छडा आ कोन अछि फ्लावर अछि आउरी अछि गोटे रूट खाउछो जोडा ऑरेंज कलर हेतो अछि कोनटा सेटा कैरट होछि ऑरेंज कलर सेमती फाइकोबिलिन्स variety of pigments diverse group of pigments are found in algae जाको तमरो ग्रीन कलर हेता परंती रेड कलर हेता परंती ब्राउन कलर हेता परंती ब्लैक ग्रीन ब्लू ग्रीन किंबा सिल्वर येलो ग्रीन different type of colors देखा जांती. So phycobilins are the variety or diverse group of pigments mainly found in algae जाकर देखा जाती. So phycobilins are colored other than green or orange or yellow other colors. So phycobilins are other colors. Chlorophylls are the primary pigments or main pigments. They are primary or main pigments. Primary or main pigments means if it is a photosynthetic organism that means it must contain chlorophyll. से जदि गोटे photosynthetic organism ताहले chlorophyll बाध्य थिबो. So chlorophyll found in all plants along with the algae. Algae और सब जाक plant रे chlorophyll देखा जाए. Carotenoids may present may not present. Phycobilin may present may not present. Carotenoid थाई पारे न थाई पारे. Phycobilin थाई पारे न थाई पारे. तेणु सेमान को जाए accessory pigment. की pigment? Accessory pigment. Phycobilin is also an accessory pigment. Accessory means if present it helps to chlorophyll molecules. If present it helps to chlorophyll molecules. जदि carotenoid phycobilins थिबो ताले से माने ultimately chlorophyll molecule को help करूथिबे. तो accessory माने कोन? queen अछि queen पाखरे थाई पारे ताकर adjacent जो माने तो से माने queen को help करिवे तो से माने होचन accessory. So chlorophyll are the primary or main pigments. Carotenoids are accessory and phycobilins are also accessory pigments. If present they help to chlorophyll molecules. से माने carotenoid chlorophyll molecule को help करिवे. बुझा पड़ला. So what are the different kinds of chlorophyll?
there are mainly 7 types of chlorophylls have been reported. केते प्रकार रो 7 प्रकार रो कोन कोन chlorophyll A B C D E and other are bacteriochlorophyll bacteriochlorophyll chlorophyll A B C D E and bacteriochlorophyll chlorophyll A B C D E and bacteriochlorophyll. Carotenoids are maybe of two kinds. One is keratin, second is xanthophyll. Keratin and xanthophyll. Keratin or xanthophyll. So carotenoids ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି keratin ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି xanthophyll. Two kinds of carotenoid pigments, one is keratin, the other one is xanthophyll. Keratins are orange in color. What color? Orange in color. Xanthophylls are yellow in color. Keratin jako orange color, xanthophyll ta yellow color. Keratins are without oxygen. Xanthophylls are consisting of oxygen. Keratin रे oxygen नथिबो, xanthophyll रे oxygen थिबो. हम तार structure टा उठी देखिबा जानि परिबा. The phycobilins are maybe of different types, but mainly some types of phycobilin proteins are fucoxanthin, phycoerythrin, phycobilin pigments are of various types, but some examples are fucoxanthin, phycoerythrin. Fucoxanthin, phycoerythrin. So chlorophyll molecule, the structure हमें देखिबा जदी chlorophyll molecule consisting of a head and a tail. Head and tail. गोटे हेड थाए आ गोटे टेल थाए. से हेड टा इज ए porphyrin ring. से हेड टा होची गोटा porphyrin ring. गोटे porphyrin ring. आ टेल टा होची तमे साधारणतः पढिथिबो कि नेम जाननी हाइड्रोकार्बन टेल माने कार्बन हाइड्रोजन चेन गोटे. कार्बन हाइड्रोजन चेन देखिछो केबे हाइड्रोकार्बन चेन माने साधारणतः तमे केमिस्ट्री आउट डिटेल पढले तमे जानिबो हाइड्रोकार्बन चेन बैकबोन कार्बन हेतिबो ताको फिल अप हेतिबो हाइड्रोजन बैकबोन कार्बन हेतिबो और ताको फिल अप हेतिबो हाइड्रोजन तमे आउट डिटेल पढला बेले जानिबो. तो गोटे हेड porphyrin ring और टेल टा होची हाइड्रोकार्बन. टेल टा हाइड्रोकार्बन. Carotenoid रो गोटे एग्जांपल होची बीटा carotene which is present in carrot and gives orange coloring to carrot. Carrot रे थाए आ carrot को कलर दिए orange color. So beta carotene is a kind of carotenoid pigment. अब beta carotene हमें गाजर खाइले को विटामिन्स पाओ विटामिन सी. आउ
आम अंधार कण हेले आम को विटामिन पाए कहू विटामिन ए आ विटामिन ए आम कोथरे मिले ना ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स हम जतल खाओ हां तो कैरोटीन रे थाए बीटा कैरोटीन कैरोट रे थाए बीटा कैरोटीन दैट बीटा कैरोटीन इज ए हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ 2 6 मेंबर रिंग दीटा रिंग थिबो दीटा एंड रे दीटा 6 मेंबर रिंग दीटा एंड रे थिबो आउ आमे ताकु जतल खाइबा दीटा मॉलिक्यूल विटामिन ए पाइबा तो बीटा कैरोटीन ता साधारणतः गोटे 6 मेंबर रिंग dita 6 member ring 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो कितना आला देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो dita 6 member ring within this a hydrocarbon chain जतरा में ए विटामिन कैरोटीन ता खाऊ जतरा खाऊ खाल हम डाइजेस्ट करू एटे भांगी देला हम दीटा मॉलिक्यूल मिले सेटा होची विटामिन ए तो बुझी परछो आम जो लिफी वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स किसी खाओ कि कैरोट खाओ खाइला आम विटामिन ए पाओ केमती ना बीटा कैरोटीन को आम डिग्रेड करके दुटा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए बुझा पड़ला तो दैट इज बीटा कैरोटीन तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव little more details about chlorophyll pigment and then we will go to light reaction and dark reaction clear so before that you just remember the structure of chlorophyll A कौन कहली गोटे कौन थाए गोटे हेड थाए आउडे टेल थाए दैट हेड को हम कौन को porphyrin ring आउडे टेल टा हाइड्रोकार्बन टेल तो porphyrin ring consisting of 4 chiral rings तो चारटा रिंग अच्छी पायरल रिंग 1 2 3 4 पायरल रिंग्स एंडिंग विथ नाइट्रोजन चारटा पायरल रिंग एंडिंग विथ नाइट्रोजन दैट नाइट्रोजन इन टर्न इज जॉइंट टू मैग्नीशियम काको जॉइन करता है मैग्नीशियम को ते पूराटा को हम कहबा porphyrin रिंग ता आ ताको गोटे चेन गोटे थाए गोटे पोजीशन रे CH3 गोटे थाए मिथाइल ग्रुप CH3 गोटे थाए सेटा होचे मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल A रे थाए मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल A रे थाए मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल B रे मिथाइल बदल रे गोटे एल्डिहाइड ग्रुप थिबो CHO so chlorophyll A molecular formula C55H72 C55H72 O5 N4 Mg chlorophyll B C55H70 O6 N4 Mg chlorophyll A molecular formula C55H72 O5 N4 Mg chlorophyll B C55H70 O6 N4 Mg क्लियर तो देखो क्लोरोफिल A रे कौन था मिथाइल आउ CH3 मिथाइल रो फार्मूला किंतु क्लोरोफिल B रे था CHO गोटे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था तेणु एडी C55H70 एडी ठीक अछि O5 अछि क्लोरोफिल A रे जेहेतु CH3 अछि किंतु क्लोरोफिल B रे आउट ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थाए तो O6 हां
एडी H3 अछि एडी H कते गोटे अछि एडी केतरा अछि तीनटा याठो एडी केतरा एक्स्ट्रा अछि दीटा अछि तेणु एडी H72 हला किंतु एठी हाइड्रोजन गोटे अछि तेणु दीटा कम H70 क्लियर so this is all about introduction to photosynthesis site of photosynthesis and the photosynthetic pigment clear any doubt fully clear if I'll give you the note you will write down the fair note and read write revise and we'll meet in next week on this time okay thank you